Hi guys, yesterday we have completed our responsibility towards investors, employees. ये सारी चीजें हमने कवर करनी थी and now we going to start social responsibility towards protection of environment. तो ऊपर जो हमने सीखा था उसमें environment complete नहीं किया हुआ था, हमने cover नहीं किया था, तो now we are going to take this opportunity, right? So now what we can do, I'll just share you one thing. So now here we will start social responsibility towards protection environment. ठीक है ना? अभी क्या लिखा है कि हमारा एम्प्लॉयज कवर हो गया, इन्वेस्टर्स कवर हो गया है, देन ओनर्स फंड्स कवर हो गया, गवर्नमेंट कवर हो गया, तो ये सारी चीज कवर होने के बाद बचता कौन सा है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. तो अब क्या हो रहा है, क्योंकि एनवायरमेंट से हम सारे रिसोर्सेज जो भी हमें चाहिए मोस्टली हमें एनवायरमेंट से मिलता है. वी डिराइव एवरीथिंग फ्रॉम द नेचर. So it's our responsibility to protect our nature and to give something in return to our nature. तो हर एक बिजनेस की कंपल्सरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है टू प्रोटेक्ट दी एनवायरमेंट. तो अब हम आगे से पढ़ेंगे क्या क्या कौन से तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बिजनेस की. ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ सकता है, तो हम लोग को मतलब जब जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो कंप्लीट करना है, उसमें कुछ भी स्किप नहीं कर सकते. तो वी नीड टू कंप्लीट एवरीथिंग इन दिस चैप्टर और सब बहुत इजी इस चैप्टर में. सो लेट्स बिगिन. यहाँ पे बोल रहा है बिजनेस शुड बी कमिटेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट environment. Sorry. Business should be committed to protect and promote environment. Protect भी करना है प्लस promote भी करना है. हम खुद protect कर रहे हैं अलग बात है, उसके बाद हमें promotion भी करना चाहिए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी करो. environment को protect and promote करना चाहिए. ठीक है. Business uses all types of resources from nature, so it is an obligation to protect the environment. It should not create imbalance in nature. Okay, so now business extraction of the raw material, improper management of resources, generation of waste and byproduct. पहले तो वो नेचर से रॉ मटेरियल ले लेती है, फिर इम्प्रॉपर मैनेजमेंट करती है रिसोर्सेज का, फिर जनरेशन ऑफ वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट. तो ये सारी चीजें एक बिजनेस करता है. तो एंड दैट इन्फ्लुएंस ऑन एनवायरमेंट. ये सब चीजों से क्या होता है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है. इसलिए हमें क्या करना चाहिए ना. Industrialization results in environmental pollution by generating hazardous waste and has increased the risk of to environment. Environmental issues like loss of biodiversity, release of genetically modified organisms are the main issues. ठीक है. जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो एनवायरमेंट फेसिंग अ मेजर इशू. बहुत टाइप की पोल्यूशन हो जाते हैं एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट को क्लीन करना बहुत मुश्किल है और उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हमें फेस करना पड़ता है. फिर जो भी ड्रॉट्स होती है, फ्लड्स होती है, ये सारी चीजें भी एनवायरमेंट में हमें फेस करना पड़ता है. तो व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस ऑन एनवायरमेंट. इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस ऑन एनवायरमेंट. एयर पोल्यूशन हो जाए, वाटर पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज. ठीक है. तो ये सारी चीजें होती है इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑन एनवायरमेंट. Protection of environment benefits business from any angles, such as creating awareness among customers, employees, saving costs, laws, government control, etc. Protection of environment से हमें क्या क्या benefits है? Protection of environment benefits business from many angles, such as creating awareness among customers, employees, saving costs, laws, government and control, etc. ठीक है. तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम जो भी होती है, अगर हमने एनवायरमेंट को सेव रखा है तो हमें प्रॉफिट भी होते हैं, हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है, एनवायरमेंट भी सेव रहता है. फिर एम्प्लॉय कंज्यूमर में ट्रस्ट पैदा होता है कि ठीक है ये जो कंपनी है वो एक अच्छा काम कर रही है. तो इट्स नॉट ओनली द प्रॉफिट मेकिंग बट ऑल्सो इट्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबल कंपनी. So now what are the 4 R's? यहाँ पे the number of waste prevention techniques are available. The number of waste prevention techniques are available and they are commonly summarized as the so-called 4 R's: reduction, reuse, recycling and recovery. Reduction, reuse, recycling and recovery. तो हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है कि हाउ टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. और जो मेनली जैसे हम बोलते हैं 4 R's. रिडक्शन करो, कॉस्ट रिडक्शन नहीं, यहाँ पे हो रहा है वेस्टेज रिडक्शन करो. जितना भी आपका वेस्ट निकल रहा है जो एनवायरमेंट में आप फेंकने वाले हो उसको रिडक्शन लाओ. उसमें अगर वो रिडक्शन नहीं हो रहा है तो रीयूज करो. जो भी वेस्ट हो रहा है उसको रीयूज करो, रिसाइकल करो. और एट दी एंड कुछ नहीं हो रहा है तो रिकवरी करो. क्या हो रहा है रिकवरी मतलब जो भी वेस्ट आपका बन रहा है उससे कुछ और प्रोडक्ट बनाने की ट्राई करो. So this is all something we can cover here. So wherever possible waste reduction is preferable option. Wherever possible waste reduction is a preferable option. If waste is produced then every effort should be made to reuse if it is practicable. ठीक है. Recycling is the third option. Recycling should only be considered for waste which cannot be reduced or reused. जो हम कोई reuse भी नहीं कर सकते. क्योंकि अगर आप सपोज एक कोई चीज का लाइक दूध से बहुत सारी चीजें निकलती है बाय प्रोडक्ट, हम यूज कर लेते हैं सारा चीजें.
तो ऐसे हमें कोई भी हमारा प्रोडक्ट हो तो हमें देखना चाहिए तो दूसरा कौन सा रीयूज हो सकता है, तो हम वो रीयूज करें, रीयूज भी नहीं हो रहा है तो फिर रिसाइकल, क्योंकि रिसाइकल में भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और इसमें भी वेस्ट होता है। तो पहले रिडक्शन ट्राई करो कि जितना कम से कम वेस्ट हो वैसा। जैसे हमारी मॉम करती है हमारे घर में, पहले चावल बनाती है, फिर चावल से कुछ बच जाता है तो उसको फ्राई कर देती है, फिर उसमें भी कुछ बचा तो उसका पराठा बना देती है। तो शी इज डूइंग ऑल द थिंग। व्हाट शी डू, शी रिड्यूस द वेस्टेज, पहले कम बनाएगी, ऐसा नहीं कि सारे लोगों की जगह वो डबल बना ले, नो, शी विल रिड्यूस, शी विल ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट और ट्राई टू रिड्यूस जितने घर में अवेलेबल लोग हैं उतना ही बने। फिर क्या करते हैं, ज्यादा बन भी गया तो शी विल ट्राई टू रीयूज, एंड अगर रीयूज भी नहीं हो रहा तो वो रिसाइकिल करेगी, क्योंकि सेम अगर राइस नहीं यूज हो रहा है तो आप क्या करोगे, रिसाइकिल में क्या करोगे, आप कुछ फ्राई वगैरह कर दो, रिसाइकिल। और रिसाइकिल की बात भी नहीं हो रहा है तो रिकवरी, वो एक फिर होता है, फाइनली इट मे बी पॉसिबल टू रिकवर मटेरियल्स और एनर्जी फ्रॉम वेस्ट व्हिच कैन नॉट बी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। मतलब ऐसा ऐसा कुछ वेस्ट है जिसमें आप उसमें से कुछ मटेरियल निकाल सकते हो। लाइक वी नो दैट कि जब आप भंगार वाले कोई ट्यूबलाइट या कुछ बेचते हो तो वो क्या करता है, तोड़ तोड़ के उसके अंदर से जो कॉपर वगैरह होता है ना वो निकाल लेता है। तो वैसे रिकवरी करो, जितना आप उसमें से कॉस्ट निकाल सकते हो वो रिकवरी करो, उसके बाद आप फेंको वो चीज के लिए, ठीक है। तो अपनी मम्मी क्या करती है कि वो फेंकती है तो भी क्या करती है, खुद को फेंकती है, सो दैट कोई इंसान खाए वो ट्रेली कचरे के डब्बे में न जाए। तो ऐसे वो हम रिकवरी करते हैं एक तरफ से देखा जाए तो। ऐसे ही बिजनेसेस में भी हम क्या करते हैं, पहले तो रिडक्शन वाला ट्राई करें, रिडक्शन नहीं हुआ तो रीयूज करेंगे, रीयूज भी नहीं होगा तो फिर हम रिसाइकिल करेंगे, तो रिसाइकिल भी लास्ट में पॉसिबल नहीं हुआ तो रिकवरी ऑफ द मटेरियल करेंगे। फाइनली इट मे बी पॉसिबल टू रिकवर मटेरियल्स और एनर्जी फ्रॉम वेस्ट व्हिच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, रीयूज और रिसाइकिल। तो हमें ये समझ आ गया कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं लोग, क्योंकि एक्सट्रैक्शन हम रॉ मटेरियल्स भी ले रहे हैं, फिर हम लोग मैनेजमेंट में मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कभी भी ज्यादा यूज कर लेते हैं, मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करते, फिर जनरेशन ऑफ वेस्ट एंड बाई प्रोडक्ट उसका इन्फ्लुएंस होता है ऑन एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट जब इन्फ्लुएंस होगा तो बहुत सारी चीजें आप एनवायरनमेंट में फेंकोगे, इंडस्ट्रियल रिजल्ट इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन बाय जनरेटिंग हैजार्डियस वेस्ट एंड हैज इंक्रीज द रिस्क टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस ऑन एनवायरनमेंट, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज, एंड व्हाट अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट बेनिफिट। अगर आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करोगे तो आपको काफी सारी चीजें बेनिफिट मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस होगा, आपके एम्प्लॉयज खुश रहेंगे, फिर गवर्नमेंट के भी कम कंट्रोल होंगे, अदरवाइज आप ज्यादा एनवायरनमेंट को खराब करोगे तो गवर्नमेंट भी ज्यादा कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। व्हाट आर द वेज टू रिड्यूस दी लाइक व्हाट आर द वेज टू रिड्यूस और इंक्रीज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, क्या कर सकते हैं, द नंबर ऑफ वेस्ट प्रिवेंशन टेक्निक, जो भी वेस्ट प्रिवेंशन टेक्निक्स है क्या है, विच इज डिवाइडेड इंटू 4 आवर्स। नाउ दैट इज आर रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकिल एंड लास्ट में रिकवरी, ठीक है। नाउ ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया। हमारा क्या था, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है अभी तक, वी हैव स्टडीड फर्स्ट ऑफ व्हाट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉफिट मेकिंग है उसके अलावा भी जिन लोगों से हम काम लेते हैं, हमारे एम्प्लॉयज, हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे गवर्नमेंट और हमारी सोसाइटी, एंड अगेन दिस एनवायरमेंट, जिससे भी हम जो जो चीज लेते हैं हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी की वी डू नॉट हार्म देम, वी प्रोटेक्ट देम इन बेस्ट मैनर एंड वी टेक केयर ऑफ देम, राइट। अगर हम उनकी अगर अभी से टेक केयर नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो बीइंग अ बिजनेसमैन आपको ये सारी चीजों का प्रोटेक्शन करना पड़ता है। तो हमने किन के बारे में पढ़ा, पहले तो ओनर्स फंड, owners responsibility towards owners, responsibility towards employees, responsibility towards investors, responsibility towards consumer, responsibility towards government, and the responsibility towards society, and the last responsibility towards the environment, ठीक है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ी, उसमें से कोई ना कोई एक जरूर आता है एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं ना, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर में। तो हमें अपने दिमाग से पॉइंट्स, मैंने एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसको रेट्रोफाई करने की जरूरत नहीं। अगर आपको पूछा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज क्या होती है, तो बीइंग अ एम्प्लॉय व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर कंपनी। इट्स लाइक कि जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, मेरे को एज एम्प्लॉय जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, करियर ग्रोथ होना चाहिए, रेम्यूनरेशन होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन प्रॉपर होनी चाहिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। तो आपको कोई 4 या 5 पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि आपके 4 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चन आते नहीं। तो ये सारी चीजें हो सकती है जो आप आराम से लिख सकते हो। अगर आपको इन्वेस्टर्स के लिए कोई पूछे तो व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द इन्वेस्टर्स, तो बीइंग इन्वेस्टर व्हाट आर एक्सपेक्टिंग, कि सबसे पहले तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, मेरे इन्वेस्टमेंट सेफ होनी चाहिए। थर्ड हमारा वी कैन से अगेन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स के बीच में और द कंपनी के बीच में, सो दैट इन्वेस्टर कैन टेक अ प्रॉपर डिसीजन। एंड फोर्थ यू कैन से दैट कि अगर इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टर वांट्स की कंपनी शुड बी ग्रोइंग, अगर कंपनी
स्टेगनेंट हो गई कहीं ना कहीं, तो फिर कंपनी को ग्रो नहीं होगा तो इन्वेस्टर्स को भी ग्रो नहीं होगा। तो आप अपने हिसाब से पॉइंट्स लिख सकते हो, दिस इज सो इजी थिंग, राइट। नाउ लेट्स कम टू द बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या होता है? पहली बात तो बिजनेस एथिक्स के बारे में नोट एथिक्स। एथिक्स मतलब हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ एथिक्स होता है। एथिक्स स्कूल में जाते हो तो एथिक्स होता है, कॉलेज में जाते हो तो एथिक्स होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन दैट यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड डू दिस, डूज एंड डोंट्स आर दी एथिक्स, राइट। अब बिजनेस के लिए अलग एथिक्स का अगर हम करते हैं तो एक अलग एथिक्स होता है, कपड़े पहनने के हिसाब से एथिक्स होता है, बाहर जाने के हिसाब से एथिक्स होता है, घर पे कितने बजे आना है, ये सारे एथिक्स होते हैं, राइट। तो बिजनेस एथिक्स एक पार्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, वी कैन से इट्स अ कोड ऑफ कंडक्ट। So let's begin what it's saying, business ethics concept. The word ethics is derived from the Greek word ethos, which means character. ठीक है, एथिक्स मतलब कैरेक्टर, आपको कैसे रहना है, कैसे बनना है, तो एक कैरेक्टर देता है वो एक चीज को, ठीक है। कि इसके बियॉन्ड कुछ नहीं जाना है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके पीछे नहीं है, डूज एंड डोंट्स का एक लिस्ट है। तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, दिस कम्स इन द ऑब्जेक्टिव्स, तो हमें ये मार्क्स देना है कि दिस इज द वर्ड एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथॉस, व्हिच मींस कैरेक्टर। एथिक्स मींस अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो व्हाइल द बिजनेस, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये तो हो गया कैरेक्टर। एथिक्स मींस अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो, while the business ethics refers to the code of conduct that business are expected to follow, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ethics are the rules and principles that organization should follow. Organization should follow, organization could be anything. It can be individual, it can be partnership, it can be school, or it can be anything organization. But business ethics are the ethics code of conduct which should be followed by the business, ठीक है। Now, ethics refers to the code of conduct. Business ethics refers to the code of conduct that business are expected to follow while doing a business. Through ethics, a standard is set for the organization to regulate their behavior. Through ethics, a standard is set for the organization to regulate their behavior. This principle them in distinguish between the wrong and the right path of the business. This helps them to distinguish between the wrong and the right path of the business. Ethics deals with the concepts such as right and wrong, good or bad, fair, unfair, just and unjust, legal and illegal, proper and improper in respect of human action. Ethics is a branch of social science. Ethics is a branch of social science. ये सब objectives में आ सकते तो mark it very carefully. Ethics is a branch of social science. So normally ethics क्या होता है, आपको एग्जाम में आ गया ना, write about the business ethics. So start with the ethics. Ethics is a set of rules and regulations which an organization should follow. Whereas a business ethics is the code of conduct for the business which business should follow. Ethics, business ethics is giving a rules and regulation. It specifies the do's and don'ts. And it also gives the fair and unfair practice, which is good, which is not good. ये सारी चीजें हमें ethics के बारे में पता चल through ethics we can set a code of conduct which should be followed. So obtain the good, what we say, to obtain the good condition in the market, good image in the market. अगर हमारा ethics अच्छा नहीं होगा, we are not behaving ethically, तो हमारे मार्केट में इमेज अच्छी नहीं होगी, राइट। वी ऑलवेज वर्क फॉर आवर एथिक्स कि नहीं भाई, अगर हमने ये वाला चीज फॉलो नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे और लोग ऐसे करेंगे, बिकॉज देयर इज ऑलवेज द एथिकल रूल्स। हम कितना भी बोल ले कि नहीं, but there is always some ethical standard should be set for ourselves, for our business or for anywhere we are going. So यहाँ पर हो गया हमारा ये business ethics का meaning। आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आते एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स और लाइक दैट, तो आप अपने हिसाब से ये ऑन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। एक बार आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वांट टू अंडरस्टैंड यू कैन राइट इन योर ओन वे। नाउ यहाँ पे दिया हुआ डेफिनेशन एंड्रोक्रेन, यहाँ पे 2 डेफिनेशन, एंड्रोक्रेन का दिया हुआ, व्हीलर का दिया हुआ, तो जो भी इजी लगे यू कैन स्टडी विद दैट बिकॉज डेफिनेशन इज अ पार्ट ऑफ मीनिंग। आपको समझ आ गई तो डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन पढ़ो तो मीनिंग ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती है। तो अभी डेफिनेशन एंड्रू एंड क्रेन, बिजनेस एथिक्स इज स्टडी ऑफ अ बिजनेस सिचुएशन। बिजनेस एथिक्स इज स्टडी ऑफ अ बिजनेस सिचुएशंस, एक्टिविटी एंड डिसीजंस वेयर इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस्ड। क्या है बिजनेस एथिक्स? जहाँ पे इश्यू ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज एड्रेस्ड, जैसे वो रूल्स एंड रेगुलेशन जहाँ पे हमको पता चलता है कि ये राइट है ये रॉन्ग है। हर एक जगह का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, हर एक जगह का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, right? So business ethics is a code of conduct for the business organization that should be followed and which gives a clear picture of what is the right and what is the wrong. तो ये डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो और 2-3 बार याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा। अगर एग्जाम में नहीं आ रहा है तो एनीवेज आपके 4-4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, मीनिंग लिखो और जो फीचर्स है या फिर कॉन्सेप्ट है जो भी पूछा था आपको वो आंसर लीजिए, लेकिन ऑलवेज स्टार्ट विद योर आंसर विद मीनिंग एंड डेफिनेशन। ऑलवेज राइट इन द मीनिंग एंड डेफिनेशन, इवन इफ यू डोंट राइट द प्रॉपर definition or don't give the name of the person who has defined the term, but still you can write the meaning and definition and then start
features of the business ethics and all, which will give the clarity to the examiner कि भाई आपने ethics meaning and definition try किया, और then features and of business ethics or the investors or the responsibility investors, मतलब जो भी है proper अच्छे से लिखे, following are the responsibility towards the investors, following are the responsibility towards the employees, then only you start your answer. Don't write anything in directly. So this will give good marks to you, and I think this all are very easy. अगर आप बार बार पढ़ोगे, खुद से पढ़ोगे तो आप easily लिख पाओगे. So let's begin with the features of the business ethics. Business ethics में क्या feature होते हैं? पहले वो rules and regulation देता है, वो आपको बताता है कि what wrong and what right. ये सारी चीजें आपकी features है, तो आप features पढ़ोगे तो आप understand करोगे. Let's begin with this. Code of conduct. Business ethics is a code of conduct. It tells what to do and what not to do for the welfare of the society. All businessmen must follow this code of conduct. So this is what something code of conduct based on moral and social values. वो क्या economic वो सब values पे नहीं होता, legal, ये social values पे होता है ना, हम किसी को harm ना करें. Ethics is all like that कि हमारी वजह से किसी का कुछ बुरा ना हो. ठीक है, based on moral and social values. It contains moral and social principles for doing business. This includes self-control, consumer protection and welfare, service to society, fair treatment to social groups, not to exploit others, etc. Based on moral and social values. Got this point? Now gives protection to the social groups. अब हम अच्छे से ethics follow करेंगे तो हर एक इंसान protect होगा. Like ethics से हम animals को harm ना करें, animals को kill ना करें. तो अगर ऐसा ऐसे ethics बनाए so that they don't harm from us. तो give protection to social groups. Business ethics gives protection to different social groups such as consumers, employees, small businessmen, government, shareholders, creditors, etc. जो भी social groups में आता है, employee, consumer, सब चीजों का नाम लेके you can write it. So first हमने क्या पढ़ा? Code of conduct. Second is क्या? Based on moral and social values. Third, give protection to the social group. Then provides basic framework. It gives the social, culture, economic, legal, and other limits of business. Business must be conducted within these limits. Provide basic framework or provide basic limits. Beyond this you cannot do it. आप जा सकते हो घर से बाहर, लेकिन आने के टाइम 10 बजे फिक्स है. So these are the rules framed by the family, framed by the fathers and others. So we have to follow that way. So same thing, अगर आप ethical framework बनाते हो तो उसके beyond कुछ करते हो तो उसके लिए आपको penalties भी लगती है, right? So this gives a provide a basic framework. It gives the social, culture, economic, legal and other limits of business. Business must be conducted within these limits. Voluntarily, ठीक है. The business must accept business ethics on their own. Business ethics must be like self discipline. It must be not enforced by law. तो यहाँ पे किसी ने लॉ नहीं बनाया है. जैसे हमारे घर पे भी एक इट इज अ वॉलंटरी, राइट, बोल दिया है. इट्स कोई लीगल नहीं है कि अगर आपने तोड़ दिया तो भाई उसके लिए कानून में सजा. इट्स नॉट एनफोर्स्ड बाय द लॉ. इट इज अ वॉलंटरी. इट शुड बी taken so that we can make discipline to ourselves. लेकिन 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, ये सब चीजें हम कब बोलते हैं कि मैं discipline to ourselves. तो जैसे business ethics की बात करें तो why we are making this so that business can be disciplined, right? There is a discipline. This should be code of conduct in everywhere so that we can be disciplined. So this is the only reason behind this. अगर कोई भी rules and regulation नहीं होगा तो we will be definitely not disciplined, right? So this is the reason. So it is a voluntary, it is not enforced by law. अगर आप कोई ethics को छोड़ते हो तो कोई इसके लिए कानून की सजा नहीं मिलती. हाँ, भले आपके पेरेंट्स मार देंगे, आपके प्रोफेसर टीचर सबको दंडी मारेंगे, दैट इज डिफरेंट, पर उसके लिए आपको जेल नहीं भेज सकता, राइट? सो इट इज नॉट एनफोर्स्ड बाय लॉ. It is a voluntary. Now it requires education and guidance. Businessmen must be given proper education and guidance before introducing business ethics. The businessman must be motivated to implement business ethics. जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, राइट, तो कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट क्या है तो आपको एचआर बताते हैं कि ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट है व्हिच यू शुड फॉलो. तो वैसे ही प्रॉपर्ली गाइडेंस एंड एजुकेशन होना चाहिए कि हमारे क्या एथिक्स है, क्या नहीं एथिक्स है. द बिजनेस मस्ट बी मोटिवेटेड टू इम्प्लीमेंट बिजनेस एथिक्स. हर एक कंपनी को एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हम हमारी कंपनी में बिजनेस एथिक्स या कंपनी में या फिर टू द सोशल ग्रुप एक बिजनेस एथिक्स होना चाहिए. सो न्यू कॉन्सेप्ट. So यहाँ पे एक तो पहली बात है relative term. Business ethics change from business to business. It also change from one country to another. What is considered as good in one country may be bad in another country, right? तो सबके लिए कोड ऑफ कंडक्ट अलग अलग होता है. सिंपल बात है कि मेरे घर पे जो कोड ऑफ कंडक्ट है, सपोज मैं नॉनवेज नहीं खाती तो दिस इज कोड ऑफ कंडक्ट. हम वी आर वेजिटेरियन, बट किसी के लिए बुरा है, किसी के लिए अच्छा है, तो ऐसा नहीं हो सकता. ये इट इज अ रिलेटिव टर्म, राइट? So business ethics change from business to business. It also changes from one country to another. What is considered as good for one country may be bad in another country. Got it? And it's a new concept. Business ethics is a newer concept. It is strictly followed only in developed countries and not in poor and developing countries. क्योंकि देखो डेवलप्ड कंट्रीज
कम डेवलपमेंट जिसमें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिए, हर चीज उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि डेवलपिंग कंट्रीज में फॉलो नहीं होता है, लेकिन बहुत कम मामले में। अभी यहाँ पे भी हम बोलते कि ब्राइब नहीं लेना चाहिए, बट वी टेक इट, वी टेक इट। हम हमारे हर एक एरिया में जाएंगे तो कोई ना कोई ब्राइब लेता हुआ देता हुआ दिख जाएगा। दिस इज अगेंस्ट कोड ऑफ कंडक्ट, बट स्टिल वी डू इट बिकॉज वी आर इन डेवलप्ड फेज, वी आर इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये सारी चीजें होती है। मोस्टली डेवलप कंट्रीज में ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं कंपेयर टू पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, व्हाट आर द बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स और रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट विच बिजनेसमैन शुड फॉलो, एंड उसके बाद उसके फीचर्स है। तो उसके फीचर्स क्या, पहले तो वो कोड ऑफ कंडक्ट बताती है आपको। इट्स अ न्यू कांसेप्ट, इट्स अ रिलेटिव टर्म, मतलब सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। देन इट इज अ वॉलंटरी, इट इज नॉट अ कंपल्सरी, इट इज नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द लॉ। अगर आपने कोई कोई कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा है तो उसके लिए आपको कोई कानून की सजा नहीं देने वाला है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस, न्यू कॉन्सेप्ट है। और क्या है, प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क, गिव प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स एंड बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज। तो आप आपके खुद से अंडरस्टैंड से करोगे तो यू कैन इजीली राइट दिस पॉइंट, बिकॉज आपको 4 पॉइंट्स मैक्सिमम लिखना है। फीचर्स, फीचर्स में मोस्टली आई डोंट थिंक सो दिस इज द 8 मार्क का क्वेश्चन, तो नहीं आएगा मुझे जहाँ तक लगता है, बट यू कांट प्रिटेंड एनीथिंग, बट स्टिल ये 4 या 5 मार्क के अंदर ही आएगा ये क्वेश्चन है। तो आप आराम से पढ़ सकते हो उस चीज को। फिर उसके बाद आता है हमारा मोरल एंड सोशल वैल्यूज। बिजनेस एथिक्स का पार्ट है मोरल एंड सोशल वैल्यूज। दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स। हमको लगता है सेम है लेकिन थोड़ा अलग है, जो हम एक्सप्लेन सीखेंगे यहाँ पे क्या है। आवर वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस टू ग्रो एंड डेवलप, राइट। हर एक की अलग अलग वैल्यूज होती है, तो हमारी वैल्यूज हमें क्या करती है, टू हेल्प टू ग्रो एंड डेवलप। तो आपको मोरल एंड सोशल वैल्यूज के बारे में मीनिंग पूछा एग्जाम में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोरल एंड सोशल वैल्यूज, तो वी हैव टू राइट दिस वे। आवर वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट because they help us to grow and develop. The decision we make are a reflection of our values and beliefs, and they are always directed towards a specific purpose. हम कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, तो हमारी जैसे अपब्रिंगिंग हुई हुई है, हमारे जो मोरल्स है, हम उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। हम किसको मारने का डिसीजन लेते हैं बिकॉज हमारी वैसे अपब्रिंगिंग हुई है, दैट इज इन आवर वैल्यूज, राइट। So whatever decision we are taking, it all depends on the values we have given, right? So our values are important because they help us to grow and develop. The decision we make are reflection of our values and beliefs, and they are always directed towards a specific purpose. Social values form an important part of the culture of society. They provide general guidance for social conduct. Values such as fundamental rights, patriotism, respect for human dignity, rationality, sacrifice, equality, democracy influence our behavior in many ways, right? सब चीजों का इफेक्ट होता है ना, फंडामेंटल राइट्स का, पैट्रियटिज्म, कोई ज्यादा पैट्रियोटिक है, कोई कम पैट्रियोटिक है, रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन डिग्निटी, रैशनैलिटी, सैक्रिफाइस, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा। ये सब अगर इक्वलिटी नहीं होगी तो हर एक, अगर आपके घर में 2-3 भाई बहन और मम्मी किसी में उपनिषद करे तो आपको उस चीज पे बिहेवियर में आपको प्रॉब्लम होगा। अगर किसको लगा कि मॉम मेरी नहीं सुन रही तो आप उस तरह से बिहेवियर करोगे कि नो नो, मैं थोड़ा सा कुछ स्टबर्न हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजों का हमारे बिहेवियर पे चेंज पड़ता है। दे प्रोवाइड जनरल गाइडेंस फॉर सोशल कंडक्ट। वैल्यूज सच एज फंडामेंटल राइट्स, पैट्रियटिज्म, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, रैशनैलिटी, सैक्रिफाइस, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर इन मेनी वेज। ठीक है, तो सोशल वैल्यूज फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको ऊपर का नहीं आता तो यहाँ पे लिखना है सोशल वैल्यूज, एंड यहाँ पे लिखा नीचे मोरल वैल्यूज। तो ये दोनों भी चीजें हमें पढ़ना है, सोशल वैल्यूज और मोरल वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। और एक इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, मोरल वैल्यूज। ठीक है, ना देखो सोशल वैल्यूज, social values form an important part of the culture of the society. They provide general guidelines for social conduct. General मतलब social conduct, general guidelines क्या होती है कि हम सब इक्वल है, फिर भेदभाव नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स है, पैट्रियोटिज्म है, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी है, रैशनैलिटी, सैक्रिफाइस, इक्वलिटी, ये सब चीजें बेसिक गाइडेंस है। ठीक है, एंड on the other hand, moral values, yeah, moral values are based on the perception of right and wrong, whereas social values may also include ideas about things being socially acceptable. Social values are often based on tradition, ego, honesty, integrity, fairness, hard work, cooperation. Forgiveness, never hurt anyone. तो यहाँ पे moral values के बारे में ज्यादा दिया है. Moral values are based on the perception of right and wrong, whereas social values may also include ideas about things being socially acceptable. Social values are often based on tradition, ego. So normally this moral values का कुछ है नहीं ज्यादा, wrong and wrong मतलब actually moral values देखो, किसी के लिए नॉनवेज खाना
उनके लिए वैल्यूज में है, क्योंकि उन्होंने वो बचपन से सीखा, बट हमारे लिए वो वैल्यूज में नहीं आता है। तो ये हमेशा मोरल वैल्यूज आर बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, वेयर सोशल वैल्यूज में आल्सो इंक्लूड आइडियाज अबाउट थिंग बीइंग सोशली एक्सेप्टेबल. Social values are often based on tradition, ego, honesty, integrity, fairness, hard work, cooperation, forgiveness, never hurt anyone, etc. ठीक है, तो अभी हो गया हमारा सोशल वैल्यूज. एंड उसके बाद there should be ethics behind all business activities. The rules are created by society regarding what type of activities business should do and what should not to do. There are known as business ethics. Honesty, transparency, fairness, integrity, etc. create goodwill. It gives economical gain and long run. The code of business ethics are like that. तो बिजनेस एथिक्स में हमने बिजनेस एथिक्स पढ़ा, उसके फीचर्स पढ़े, फिर मोरल वैल्यूज और सोशल वैल्यूज, व्हिच इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल अगर आपको मोरल वैल्यूज सोशल वैल्यूज एग्जाम में लिखने आए तो यू कैन राइट इट एंड द वे यू वांट कि मोरल वैल्यूज क्या होता है, सोशल वैल्यूज क्या होता है. सोशल वैल्यूज इट इज अ पैट्रियोटिज्म, इक्वलिटी, जो हमें बाहर से मिलता है. सोशल वैल्यूज मोस्टली वी गेट फ्रॉम आउटसाइड कि हम सब इक्वल है, वी आर पैट्रियोटिक, और ये सब मोस्टली वी आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड. एंड मोरल वैल्यूज आर समथिंग व्हिच we get from our parents while upbringing, you know, जब से हम बड़े हो रहे हैं, तो it is like that. ठीक है, now we'll go for the do's and don'ts. अगर आपको एग्जाम में आया ना कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स के बारे में कुछ एक्सप्लेन द बिजनेस एथिक्स, तो ये सब लिखना, द कोड ऑफ द बिजनेस एथिक्स, डूज एंड डोंट्स, हम क्या करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. ठीक है, बिजनेस एथिक्स ऑल अबाउट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. Now, pay taxes and other charges regularly, pay fair wages, allowances, and other monetary incentives to the workers, ensure safety and security of the product, supply quality goods as per the expectation of the consumer at reasonable price, and give due respect and honor basic right of consumers, use a part of profit of society. तो जो भी करना है टैक्सेस टाइम पे पे करो, एम्प्लॉयज को अच्छी अच्छी सुविधा दो, आप कंज्यूमर्स को अच्छा प्रोडक्ट सेल करो, फिर इन्वेस्टर फेयर, गिव द फेयर रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स. तो ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए. Do not destroy healthy competition, do not cheat or exploit the customers, do not create monopoly, do not resort to hoardings or black marketing, do not create secret or unreasonable profit. ठीक है, ऐसे कोई प्रॉफिट हमें जनरेट नहीं करना चाहिए जो हमने कोई गलत तरीके से जनरेट किए हुए हैं. इन्वेस्टर्स को कोई हार्म ना करे, कुछ वी डू नॉट मतलब कोई ऐसी अनफेयर प्रैक्टिस ना करे जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को नुकसान हो. तो ये सारी चीजें हमारे डूज एंड डोंट्स में आते हैं. अवॉइड एंड एक्सेप्ट अनफेयर कंपटीशन अवॉइड करना चाहिए. कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, अग्रीमेंट विद फेलो बिजनेसमैन को कंट्रोलिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग, ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए. हमें ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं करना चाहिए जिससे कोई दूसरे बिजनेसमैन को लॉस हो कि हम कोई कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन कर ले कि नहीं अभी यहाँ पे शुगर बनेगा ही नहीं, ऐसा कुछ हम लोग कंट्रोल कर सकते सो दैट हम किसी और को बेनिफिट हो. वैसे चीजें हमें नहीं करनी चाहिए. अवॉइड एंड एक्सेप्ट इज अ पार्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स. इतना ध्यान से भी नहीं पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक्सेप्ट क्या, प्रिंसिपल ऑफ सर्विस फर्स्ट एंड प्रॉफिट नेक्स्ट. ट्रूथ इज बिजनेस एंड कस्टमर इज अ किंग. मेक योर बिजनेस जस्ट, फेयर, ह्यूमन, एफिशिएंट एंड डायनामिक. ठीक है, तो हमारा बिजनेस एथिक्स भी कवर हो गया. नाउ इट इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी जैसे हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ ली ना, ये सेम ही है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस वहां पे हमें सारी चीज हमने इन जनरल पढ़ी थी कि ठीक है एज अ बिजनेसमैन आपको ये सब करना चाहिए. पर यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लाइक दैट न्यू टर्म which has been introduced in the Companies Act 2013. And why it has been introduced? देखो हम ऊपर बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयज को ये करना चाहिए, एम्प्लॉयज टुवर्ड्स एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट यहाँ पे एज पर द लॉ इट इज कंपल्सरी कि आपको आपके नेट प्रॉफिट का 2%, एवरेज नेट प्रॉफिट जो 3 साल में आपने जितना भी नेट प्रॉफिट कमाया उसका 2% आपको कोई ना कोई सीएसआर एक्टिविटीज में डालना पड़ेगा. सीएसआर एक्टिविटीज कुछ भी हो सकता है कि कोई बैकवर्ड एरिया को डेवलप करना होता है या फिर कोई एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, तो आपको सीएसआर एक्टिविटीज इसमें दी हुई है, वो आप हम आगे पढ़ेंगे व्हाट आर द सीएसआर एक्टिविटीज. लेकिन इसको कंपल्सरी कर, और किन के लिए कंपल्सरी कर दिया वो भी यहाँ पे पढ़ेंगे. बाकी छोटे मोटे लोगों के लिए कंपल्सरी नहीं है, लेकिन जो बड़े लोग हैं बड़े अमाउंट में प्रॉफिट करते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया है कि आप आपके प्रॉफिट का कुछ ना कुछ दैट इज 2% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट should be contributed towards the society. ठीक है, now let's begin. Introduction. Corporate social responsibility is not a new concept in India. However, Ministry of Corporate Affairs, Government in India has recently notified under the Section 135 of the Companies Act 2013, along with the company's CSR policy rules 2014 and other notifications related thereto, which makes it mandatory from 15th April 2014. क्या करता है mandatory for certain companies
who fulfill the criteria as mentioned under section 35 to comply with the provision related to CSR. ठीक है, 135 में कोई कोई कंपनी को कंपल्सरी कर दिया है कि आप CSR एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करोगे ही करोगे. ठीक है, now what are these companies? We will read नीचे under section 135 of the Companies Act. CSR activities has been mandatory for companies who have fulfilled the following criteria. कौन से criteria हम लोग देखेंगे, right? Now, meaning corporate social responsibility is self-regulating business model aims to contribute to the social goals and support voluntary or ethically oriented practices. It makes a company social responsible and accountable. It makes what is the corporate social responsibility? It makes as corporate social responsibility makes company social responsible and accountable. This accountability is towards itself, its stakeholders, public in general, etc. By practicing social responsibility, companies can be cautious about economic, social and environmental aspects of the society. ठीक है, तो मीनिंग आपके हिसाब से लिखना तो ऊपर पड़ा है वो भी लिख सकते हो और ये वाला भी जो लिखा है ना वो भी लिखा कि CSR is not a new concept in the India. However, it has been introduced under section 135 of the Companies Act. It has been compulsory as per the law as per the law it has been compulsory and 2% of the जो हम पढ़ेंगे आगे वो भी आप लिख सकते हो. तो जब लिखोगे तो मीनिंग के साथ आप पॉइंट लिख सकते हो. एज इट इज लिखना कोई जरूरी तो है, आप सिर्फ समझो, समझ के लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे तो नहीं. इट इज नॉट योर 11th, इट इज नॉट इवन 10th लाइक जो हमको लाइक रेट्रोफाई करवा देते कि जैसा पढ़ा है वैसे लिखना. बट नहीं, जैसे आप 11th 12th में आते हो, यू हैव टू राइट योर ओन वर्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स. ठीक है, नाउ डेफिनेशंस यूनिटों का है अकॉर्डिंग टू आईएसओ. बहुत ज्यादा बड़ा डेफिनेशन है मेरे ख्याल से. अगर आपको समझ आएगा तो पढ़ लेना, समझ तो आ ही जाएगा. आई मीन बट इट इज नॉट, अगर आप नॉर्मल स्टडी नॉर्मल स्टूडेंट हो तो आप ये चीज स्किप कर सकते हो. इफ आप ब्रिलियंट स्टूडेंट यू कैन स्टडी दिस. ठीक है, नाउ व्हाट आर द स्कोप ऑफ सीएसआर. सीएसआर का एप्लीकेबिलिटी क्या है, कौन सी कंपनी को सीएसआर एक्टिविटीज कंपल्सरी. So let's begin. The companies having net worth of rupees 1500 crore और more, जिसकी net worth 1500 करोड़ है उससे ज्यादा है. अगर बैलेंस शीट में किसकी net worth 1500 करोड़ है उससे ज्यादा है तो उसको सीएसआर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. उसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर है, 1000 करोड़ या उसके ऊपर है तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. नेट प्रॉफिट 15 करोड़ या उससे ऊपर है तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. मतलब इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो नेटवर्क नहीं है 1500 का, टर्नओवर भी नहीं है 1000 करोड़ का, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है उसको 15 करोड़ का, तो भी उसको सीएसआर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. एंड विच इज मेड कंपल्सरी फ्रॉम ओके. सो यहाँ पे ये सारी चीजों को सीएसआर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. उसको ऑफिस में सीएसआर कमेटी बिठाना पड़ेगा. उस कमेटी के क्या रोल्स है वो भी हम देखेंगे आगे. तो ये सब चीजों को अपना लोगों क्या करना है, 2% का एवरेज प्रॉफिट का 3 साल में जितने प्रॉफिट उसका 2% उनको सीएसआर एक्टिविटीज में डालना पड़ेगा. तो इट इज ऑल्सो वेरी इजी. द कंपनीज हैविंग नेट वर्थ ऑफ 1500 करोड़, ये वाला एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है या फिर नॉर्मल आ सकता है. परफॉर्म दी सीएसआर एक्टिविटीज आर कंपल्सरी और एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर एक्टिविटी 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, विच इज वेरी इजी. The companies having net worth of 15 crore or more or turnover with 1000 crore or more or net worth of 15 crore or more during any financial year shall be required to constitute a corporate social responsibility committee of the board with effect from 1st April 2014. The board's report shall disclose the companies of the CSR companies. जो भी board report है every year जो board report आती है उसमें disclose करना पड़ता है कि CSR committee में कौन कौन members है, कितने members, उन्होंने क्या क्या frame of activities they have decided, कितना budget है, क्या सारा चीज उनको लिखना पड़ता है बोर्ड रिपोर्ट में. The board report shall disclose the composition of the CSR company. All companies shall spend in every financial year at least 2% of the average net profit of the company made during the 3 immediately preceding financial year in pursuance of its corporate social responsibility policy. तो कितना करना पड़ता है, all companies shall spend in every financial year at least 2% of the average net profit of the company made during the 3 immediately preceding financial year in pursuance of its corporate social responsibility. The company shall be required in incorporate in sports report and annual report on CSR containing the following particulars. ठीक है, अगर आपको इतना याद भी नहीं आता तो एप्लीकेटिव सीएसआर आपको पढ़ना है कि एप्लीकेटिव स्कोप है जिसका 1500 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ हो, 15 करोड़ उससे ज्यादा नेटवर्थ हो या 1000 करोड़ या उससे ज्यादा टर्नओवर या 15 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट हो तो उसको सीएसआर एप्लीकेबिलिटी हो जाता है. एप्लीकेबिलिटी होने के बाद ये आपको फॉर्म दी सीएसआर कमेटी और सीएसआर कमेटी में जो भी मेंबर्स होंगे और उसमें क्या करना पड़ता है, जिसको ये एप्लीकेबिलिटी हो जाता है तो उसको 2% एवरेज नेट प्रॉफिट का कंपनी को सीएसआर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पड़ता है और उतना पैसा मार्केट में देना पड़ता है सो दैट टू डू समथिंग गुड इन सोशल. ठीक है, नाउ ये वाला ठीक है. सीएसआर पॉलिसी brief outline of the company's CSR policy including overview of the projects program
क्या क्या रहता है कि यहाँ पे द कंपनी shall be required to incorporate in its board report an annual report on CSR containing the following particulars. कभी भी एग्जाम में ये भी आ सकता है कि what are the CSR point which should be included in the board report or annual report. ठीक है, what are the CSR points shall be included in the board report or annual report. तो यहाँ पे लिखना है कि the composition of CSR committee. को नहीं याद आ रहा बड़ा ठीक है, छोटे छोटे वो तो लिख सकते हैं, बिकॉज यू हैव ओनली 4 मार्क्स का 2 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, लिख सकते हो कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी. सीएसआर कमेटी में कितने लोग हैं, क्या कंपोजिशन है, कौन कौन है, वो सभी डिटेल्स देखनी पड़ती है. एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि वो जरूरत होती है हम लोग को बजट देखने का कि कितना स्पेंड होना चाहिए, कितना स्पेंड किया. ठीक है, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स. प्रिस्क्राइब सीएसआर एक्सपेंडिचर, क्या क्या आपने सीएसआर एक्सपेंडिचर करना है. डिटेल्स ऑफ द मनी स्पेंट ऑन द सीएसआर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. डिटेल्स ऑफ द मनी, कितना पैसा कहाँ कहाँ पे खर्चा किया है, वो हमें डिटेल्स देनी पड़ती है. तो पहले क्या देना पड़ता है, फॉर्म ऑफ कमेटी मेंबर्स की क्या क्या डिटेल्स ऑफ द कमेटी मेंबर्स. डिटेल्स होने के बाद उसके बाद कितने एक्सपेंडिचर किया हमने सीएसआर पे. फिर उसके बाद हमने वो 2% वाला एवरेज 2% कितना होता है वो भी लिखना है. फिर उसके बाद डिटेल्स ऑफ मनी स्पेंट ऑन सीएसआर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर and describe CSR expenditure in case of company has failed to spend the 2% of the average net profit of the last 3 years financial year reason है. अगर कोई भी कंपनी 2% का जितना भी बनता है उतना एक्सपेंस नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा, उसको उसका रीजन देना पड़ेगा. why they have not utilized that 2% of the net profit, why they have not expensed the 2% of the net profit. Easy है. Sorry. So now we will have CSR committee. CSR committee कितने लोग की होती है, ये भी एग्जाम में एक पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के लिए आ सकता है. CSR committee, the CSR committee will consist of 4 directors. कितने डायरेक्टर हुए CSR committee में, 4 directors who shall meet at least twice in a year to discuss and review the CSR activities and policy. What are the who are the CSR committee में आपको अगर आपको एग्जाम में आ गया 2 मार्क्स के तो पहले लिखना है कि CSR committee includes the 4 directors who meet twice in a at least, वो ज्यादा भी मिल सकते हैं but at least 2 times तो मिलना ही चाहिए. Who shall meet at least twice in a year to discuss and review the CSR activities and policy. The CSR committee will recommend for formal CSR policy and will recommend particular CSR activities, prepare a budget, describe how the company will implement the project and establish and transparent means to monitor progress. इतना नहीं याद होता है तो लिख देने का सिर्फ 2 डायरेक्टर 4 डायरेक्टर्स होने चाहिए जो कम से कम साल में 2 बार मिले. तो डिस्कस द सीएसआर पॉलिसी, टू फ्रेम द सीएसआर पॉलिसी, टू मेक आउट द बजट फॉर द सीएसआर. ठीक है, सीएसआर कंपनी विल रिकमेंड फॉर फॉर्मल सीएसआर पॉलिसी, रिकमेंड करेगी, वो बनाती नहीं, वो रिकमेंड करते, रिकमेंड फॉर्मल सीएसआर पॉलिसी एंड विल रिकमेंड पर्टिकुलर सीएसआर एक्टिविटीज. कोई भी सीएसआर एक्टिविटी रिकमेंड करेगी. प्रिपेयर अ बजट, डिस्क्राइब हाउ द कंपनी विल इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट. ठीक है, रिकमेंड द सीएसआर पॉलिसी, recommend the CSR activities, prepare a budget, describe how the company will implement the project. ठीक है, इतना अगर CSR कमेटी के बारे में आ गया 2 मार्क्स का तो आपको ये लिखना है. 4 मार्क्स का भी 4 मार्क्स के लिए तो बनता नहीं है तो 2 मार्क्स के लिए आप लिख सकते हो. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के बारे में आप मीनिंग पूछोगे तो मीनिंग लिख देना. फिर उसके बाद उसके और क्या कंपोनेंट होते हैं CSR कमेटी, CSR एक्टिविटीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR, तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं. CSR activities, what kind of activities are treated as CSR activities. मैंने क्या किया, मैंने कैसे अपने ही बिल्डिंग में एक बड़ा घर बना के मैंने अपने एम्प्लॉइज को दे दिया तो वो CSR एक्टिविटीज है. CSR एक्टिविटीज समथिंग व्हिच वी आर गिविंग, व्हिच वी आर डूइंग फॉर समथिंग आउटसाइड, जहाँ पे नॉर्मली लोगों को बेनिफिट हो. ठीक है, so the policy recognizes that corporate social responsibility is a commitment to support initiative that measurably improves the lives of the underprivileged by one or more of the following focused areas are notified under section 135. So under section 135 following are the CSR activities. ठीक है, क्या है, eradicating hunger, poverty and malnutrition, promoting preventive health care and sanitation and making available safe drinking water. मतलब अगर आपने कभी मार्केट में जाके ट्रेन स्टेशन में नोटिस किया हुआ है तो वहाँ पे बड़े बड़े वो प्याऊ बने होते हैं पानी के, तो जहाँ पे नाम भी लिखा होता है कि बाय दिस कंपनी, दिस ऑल आर कमिंग अंडर द CSR एक्टिविटीज. बैठने की बेंचेस होती है जहाँ पे आपको LIC का नाम होगा. तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो नहीं पता तो नेक्स्ट टाइम कभी भी स्टेशन विजिट करोगे जस्ट सी कि वहाँ पे बहुत सी चीजें की होगी और वहाँ पे एक कंपनी का नाम लिखा होगा, वहाँ पे नीचे लिखा दिस इज अंडर CSR एक्टिविटीज. आप नेक्स्ट टाइम ऑब्जर्व करना. Promoting education, including special education, employment, enhancing vacation skills, especially among children, women, elderly, and different able and livelihood enhancement projects. Family education, hunger eradication है. फिर education के ऊपर उन्होंने कुछ काम किया है. Reducing child mortality and improving maternal health by providing good hospital facilities and low cost medicines. ठीक है,
बच्चों के साथ उनको अच्छा हॉस्पिटल वगैरह बना के देना भी एक CSR एक्टिविटी है। Ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of the flora and animals welfare, agroforestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपने कोई भी स्टेप्स लिए तो दैट इज CSR एक्टिविटी। आपको वुमेन हेल्थ के बारे में प्रमोट करना है, वुमेन एजुकेशन के बारे में प्रमोट करना है, हंगर इरेडिकेशन करना है, तो दीज ऑल आर कमिंग अंडर CSR एक्टिविटीज। जब भी आपको एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आएगा, व्हाट आर द CSR एक्टिविटीज, व्हाट इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांस एंड व्हाट आर द CSR एक्टिविटीज, व्हाट इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांस एंड व्हाट इज द CSR कमिटी, व्हाट आर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांस एंड व्हाट इज वेन इट इज एप्लीकेबल CSR। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बना के आ सकते हैं। तो आपने ये वाला पार्ट पढ़ा है तो यू कैन इजीली राइट द आंसर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, पॉइंट्स पढ़ लेना, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इस्लामी एरिया डेवलपमेंट, सारी चीजें। So B is allocation of funds. The company would spend not less than 4% of the average net profit of the company made during the 3 immediately preceding financial year. The surplus arising out of CSR activity will not be part of the business profit of the company. ठीक है, तो 2% आपको जितना भी 3 साल में जितने भी प्रॉफिट है उसका एवरेज करना है, उसका 2% निकालना है। ठीक है ना। नॉन कंप्लायंस ऑफ CSR एक्टिविटीज, अगर आपने CSR एक्टिविटीज में कंपल्सरी कोई कंप्लायंस नहीं किया तो क्या इफेक्ट होगा। देयर इज नो स्पेसिफिक पेनल प्रोविजन फॉर द नॉन कंप्लायंस अंडर सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट। एक्चुअली इसके कोई पेनल्टी प्रोविजन तो नहीं है। हाउएवर नॉन डिस्क्लोजर और एब्सेंस ऑफ डिटेल्स इन द CSR पॉलिसी एंड इट्स implementation in the board's report would attract the penalties। लेकिन आपने कोई CSR पॉलिसी नहीं बनाई, उसके और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं किया है, तो उसके लिए आपको पेनल्टी लग सकता है। एंड दैट पेनल्टी कैन बी मिनिमम ऑफ 50,000 to 25 लाख। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। अगर CSR एक्टिविटीज आपने उसका कंप्लायंस नहीं किया है तो कितना पेनल्टी लग सकता है। नॉर्मली CSR स्पेसिफिक कंपनीज एक्ट में नहीं है। However, non-disclosure, absence of the details about the CSR policy and its implementation and the board's report would attract the penalties. Got it? Now this all the full chapter has been completed. The company in default shall be punished with the imprisonment of term which may be extended to 3 years or with the fine of the 5 lakhs to 50,000 to 5 lakhs or with the both। तो कंपनीज को भी फाइन लगेगा जो रिस्पॉन्सिबल है CSR पॉलिसी की बनाने के लिए, और तो उनको भी फाइन लग जाएगा। ठीक है, तो here we have completed this chapter. In the next video we will do the question answers for the same which is really nice, क्योंकि अगर आपने ये सब पढ़ा होगा तो क्वेश्चन आंसर करने में बहुत मजा आएगा। We can do it। तो अभी let's take a quick recap कि हमने क्या किया है, क्या क्या पढ़ा है उस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मीनिंग क्या होती है, फिर नीड फॉर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे क्या सिंपल, अगर आपको वो सारी चीज नहीं पता तो यहाँ पे पढ़ो, ये समरी, क्विक रिकैप है। समरी आपने एक बार पढ़ लिया ना तो ऊपर का थोड़ा दिमाग लगाओगे तो लिख पाओगे। Business organization run by the profit motive, but profit maximization should not be sole aim. The responsibility of the business toward the society is called social responsibility। ठीक है, business organization run by the profit motive, but profit maximization should not be the sole aim. The responsibility of business toward the society is called social responsibility। What is the social responsibility? सिंपल में लिखना है तो the responsibility of business toward the society, the responsibility of the business toward the society is the social responsibility। Need for the social responsibility, concept of frustration, changing expression in the society, reputation, protection of the environment, optimal utilization of resources, pressure of trade union, growth of consumer movement, government control, long term self interest, long term self interest, complexity of social problem, globalization, role of India, ये सारा चीज आपको ऊपर एक्सप्लेन करते हैं। तो these are the pointers, उसके अंदर आपको जो मन करे मतलब इसके रिलेटेड आपको जैसे लिखना आप लिख सकते हो ऊपर से पढ़ के। ठीक है, now social responsibility towards different interest groups। तो हमारे पास क्या किस किस के अगेंस्ट है, towards owners, towards investors, towards employees, towards consumers, towards government and towards society। and यहाँ पे जो environment controlling है तो towards environment also we have social responsibilities। ठीक है, बिजनेस एथिक्स हमने अभी कवर किया है। सोशल एंड मोरल वैल्यूज क्या होता है, देखो यहाँ पे सिंपल में लिखा, सोशल वैल्यूज सच एज फंडामेंटल राइट्स, पेट्रियटिज्म, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, रैशनैलिटी, सैक्रिफाइस, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा गाइड आवर बिहेवियर इन मेनी वेज। Moral values such as honesty, integrity, fairness, hard work, cooperation, etc. are equally important। मोरल वैल्यूज क्या होती है जो हम खुद से जनरेट कर सकते हैं, और सोशल वैल्यूज जो हमें बाहर से मिलती है। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी मीनिंग, स्कोप्स, व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR, सारी चीजें मिलती है। तो एक बार हमने अगर ये समरी पढ़ लिया तो हम पूरे चैप्टर को रिकैप कर सकते हैं। चैप्टर को रिकैप करने के बाद हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो जब भी हम एग्जाम पॉइंट से पढ़ेंगे तो हमें ऐसे ही पढ़ना है, so that we can write। So next time we will start the exercise।
I hope you like my this video, and if you like it, if you watch it, so please guys do support, do subscribe, and which way you feel I need to improve something or you want to clarity on something, so please do comment. Bye guys. Hope you have a nice day and everything is fine. Bye guys.